अभिजीत भाई इज़ हेल्पिंग मी टू इंस्टॉल फाइनली कंप्लीट। मैंने अपना बैग। हे गाइस, वेलकम बैक टू डीएनए ब्लॉग्स एंड टुडे आप लोग गेस करो मैं कहाँ पे हूँ। आई विल ट्राई नॉट टू पुट इट इन द वीडियो टाइटल, थंबनेल पे भी नहीं लिखूँगा, बट जितने लोग गेस कर सकते हैं थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के या फिर इतना सब वीडियो देख के, इतनी क्लिप देख के कमेंट कर देना। सो इतना टाइम पास हो गया, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो टाइटल में जो लिखा हुआ है। एंड ये रही अपनी TRK, इट्स कम राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ आवर ब्रदर अभिजीत फ्रॉम Maha Auto and I've come for TRK top box which we're going to install in some time. I'll pass the camera to my son for installation, for recording. And this is another good thing that I found that I was searching. सौरभ भाई, ये आपके लिए है, आपके पास स्टॉक में नहीं है, अभिजीत के पास से मिल गया। Day I would want something similar for me at my house or you know if a garage I can build somewhere. तो ये बाइकर ज्ञानी की वेबसाइट मतलब यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर देखना उनके पास जाके। अभी हमको स्ट्रेट फिट नहीं हो रहा है, दीज 2 पॉइंट्स आर मैचिंग, तो वो बिठा लेंगे। उसके बाद पीछे साइड के लिए मार्किंग करेंगे एंड देन विल गेट द होल्स ड्रिल्ड ऑन दिस वन। एक बार इसके ऊपर ड्रिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिटिंग अपनी कंप्लीट हो जाएगी। आपको टॉप बॉक्स थोड़ी देर में पूरा दिखाता हूँ मैं। टेकिंग क्लिप्स इन स्मॉल मैन, मेरे को पहले ही ले लेना चाहिए था। बाय द वे, अभिजीत एंड प्रसाद, ये दोनों के इंस्टाग्राम आईडीज़ हैं। दे डिड अ ऑल इंडिया राइड, ओके। जो भी अपने नोट्स पे करेंसीज़ है ना, जो करेंसीज़ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब की उन्होंने राइड की है। दे कम्प्लीटेड द फर्स्ट वन, इंडियन करेंसी। सेकेंड, इंडियन नेशनल एंथम का कंटिन्यू किया है। थर्ड, एक नया आने वाला है विच इज़ यू नो डेट्स आर येट टू बी पब्लिश्ड अगेन एंड ऑल, रिविजन होने वाला है। बट अभिजीत एंड प्रसाद बोथ हैव डन these rides and you can check out their Instagram for updates. These are some other stuff that Abhijit sells at his store. Helmets starting from 2000 वहाँ पे हैं, यहाँ पे 5000 का रेंज है एंड ऊपर प्रीमियम है LS2 एंड SMK में। जैकेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। वैसे तो ये अभिजीत इज़ क्वाइट नोन पर्सन इन दिस मुंबई साइड एरिया। सो दिस एग्जैक्टली इज़ एट पनवेल। ये जो अभी नया हाईवे बना है कुछ साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले, उसके एग्जैक्टली नीचे ये मेन एक्चुअली पनवेल का चौक ही है, ये बड़ा वाला। इस साइड पे वो फेमस वड़ा पाव गाइज आर देयर ऑन द कॉर्नर, आई फॉरगॉट द नेम। सो दिस इज़ द लोकेशन। बैक टू द इंस्टॉलेशन। ये 2 होल्स तो मैच हो गए, हम इसके पीछे ड्रिल करने गए, बट दिस इज़ क्वाइट थिक एंड विल रिक्वायर अ प्रॉपर बिग ड्रिल मशीन टू मेक होल्स। तो हमने सोल्यूशन लास्ट में भी क्या डिसाइड किया, फ़िलहाल के लिए वील फिक्स 2 bolts, these 2 bolts एंड ये 2 को उसके साथ में ऐसे U क्लैम्प्स आए हुए हैं, या फिर C क्लैम्प्स बोल सकते हैं, फिर S क्लैम्प्स बोल सकते हैं। ये 4 क्लैम्प्स बॉक्स में ऑलरेडी है, जिसके हमने 2 यूटिलाइज़ कर लिए हैं अभी। तो वंस दीज 2 फिक्स, तो दिस शुड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ। अभी भी हिल नहीं रहा है जब तक हमने पूरा टाइट भी नहीं किया है ना, सिर्फ ऐसे बोल्ट्स पे अटकाया हुआ है, बट इट इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ। तो लेट्स सी हाउ वी फिनिश दिस पार्ट एंड देन बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। यूजुअली गाइज आप लोगों ने देखा रहेगा मेरे वीडियोज़ में मैं ही DIY कर रहा हूँ। आज अभिजीत भाई इज़ हेल्पिंग मी टू इंस्टॉल दिस टॉप बॉक्स। अभी सब नट बोल्ट्स टाइट कर रहे हैं एंड देन अभिजीत भाई के पास ही हैड सम 2 स्पेयर क्लैम्प्स, वी आर यूजिंग दैट टू फिक्स द स्टफ। टॉप प्लेट इज़ फाइनली इंस्टॉल्ड। ये तो एक्स्ट्रा हमने क्लैम्प्स भी डाल दिए इधर बैक साइड पे। सो एवरीथिंग इज़ नाउ रोबस्ट एंड इट इज़ सो रोबस्ट आई कैन मूव माई 236 kg TRK विद इट। ये आ गया टॉप बॉक्स, इस स्लॉट्स में अंदर जाएगा, चारों साइड से अंदर गया और अंदर जाएगा। ओके, इंस्टॉलेशन इज़ फाइनली कंप्लीट। मैंने अपना बैग डाल भी दिया अंदर, निकलने की तैयारी हो रही है। अब पूना तक चला के जाऊंगा, उसके बाद आपको आई गिव यू द फीडबैक। अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स है यहाँ से मेरा घर। सो गाइज, हियर इज़ द टॉप बॉक्स। कल चला के लाए हम अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम पनवेल टू पुणे, 110 किलोमीटर्स। कुछ आवाज़ नहीं, नो rattling, nothing. I mean, this is the first experience for me with the aluminum top box. That's why I'm sharing this feedback to you. So far, I've always used ASGK top boxes, one
on my Dominar is 45 liters. Okay, there are videos for it on my channel already, and this is 40 liter, and this is quite old. ये वाला है काफ़ी पुराना. I used to use it on my 2017 Dominar also, and this I used on 17 Dominar as well as on this one, as well as on TRK, as well as this also I've used on TRK. I used to shuffle the plates, but now I wanted to have something good on the TRK. So with this, the issue is that you always need to hold it with bungees, as there's chances of falling. Once this had fallen when I did not have bungees, so after that I always started using bungees. So there are review videos on my channel, you can check those out. So I travel a lot to my village and even otherwise, touring or short bursts in city when the climate is not good, or if you want to secure your some of your luggage. This is always good top box. That is the reason why I've got a third one. I spent so much on this. By the way, the retail for this is 18,000. I got it at a special price from Maha Auto. I know Abhijit really well. I mean, we are close friends since like 2 years now. So he gave me a special price. In fact, yesterday itself, one of my another friend, he bought a 40 liters for his Dominar, same brand. He also got a special price. So just in case if you are interested, you can contact Abhijit. I'll leave his contact in the video description for you to purchase. Now coming to the dimensions, some people would be interested in this. So let me tell you, this is 18-inch wide. Okay, 18-inch wide, and this is 15-inch this way, and the depth is almost 1 feet, I would say, or maybe 11 inches. Let me measure it this way, approximately. Yeah, you can take it as approximately 1 feet inside. Okay, this has got an angle here and even here. Okay, so the installation went well. Box space is really nice. I especially need to put my laptop bag inside it. The laptop bag in my 40 liters does not, it stays a bit cramped because the width is less. That has got a good width. The laptop bag stays there really well with some additional space on one of the sides, and this one has lots and lots of space. पूरा घर जाएगा इसमें, kind of, and you can easily fit one full face helmet, not two, just one. Now coming to the drawbacks of this, I did not like there's no stopper over here. I would have preferred a stopper at this distance, okay, because otherwise these hinges, I guess, in the long run are going to break off. Second thing, there's no belt in this over here. Normally you must have seen that these boxes come with some belt over here, so there isn't a belt. Third, there isn't a sticker. ये आप खुद बना सकते हो. Even this string to stop it, I'm going to try and do it myself. The belt inside, I'm going to try and do myself, because there are mounting points here, as well as there are mounting points here, as well as here. So I might use one of these bolts, nuts over here, to put in belts from here, so that I can, if there is something loose inside, or if my laptop bag is sitting inside, I can tie it. I can make it sit with pressure inside, so that it doesn't keep dancing inside and it won't make noise. And secondly, your laptop should not wobble too much, else your internals are going to get damaged. So this is the only thing. Second, I said there's no stopper that you can make. There are no reflectors on this one, but again, you can always paste reflectors of whatever type you want. There's no bag holder over here, straps over here to hold these. You'll have to hold it with this, but it becomes quite, if there's a lot of stuff inside, it is going to be difficult. So I plan to make some straps over here locally. Again, all this stuff that I told you, 3-4 items that I'm going to do, it's not going to cost me more than $500. Maybe I'll do a complete one single DIY video for it. Otherwise, these are the instructions inside, okay, for the box. I think it is common for all their boxes because the dimensions don't match. And the capacity over here mentioned is 12 kg max. I guess mine is X3. I'm not sure which is mine, but 10 to 12 kgs is max. But usually I'll be carrying 4 to 5 kgs only and not exceeding 120 speed. So some testing has been done by them already, and you have to, I guess, follow that.
locking mechanism and everything is really nice and sturdy as of now. No issues, works really fine, everything. So with that said, I'll end the vlog here. Do watch out for more vlogs from me for my TRK's issues. There are a lot of vibrations still in my bike. I've found a solution, so now up to 4000 rpm the bike doesn't vibrate much, it runs really smooth. But I want to compare it with another stock TRK. Then this tire issue is still an issue. No updates from Benelli. Third, this hugger is going to get replaced. I got another brand come up and I just have to figure out the mountings. Then what else? I don't remember. Headlight is another issue for me. I'm going to replace that with completely different stuff, so do watch out for that also. With that said, I'll end the vlog here. I hope you like the content. If yes, like, share, subscribe. Do ask me questions in the comments. And logging off for now. See you in a new video very soon.